sir. इसमें लिखा है shall not be heard by. नहीं, उस भी आ रहा हूँ सर. फिर से पढ़ ले. Again sir. And shall only be heard, not only be heard. Positive है sir. Only be heard and decided by benches. इससे क्या मतलब? इससे हमें मतलब सर ये है कि मतलब कि जो नॉर्मल बेंचेस का जो आपका काम था, जैसे 3 मेंबर बेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल केस, जैसे इसी केस में दीवान मोटर्स में was taken up by a regular bench. My lord said कि no, in view of this 3 and 5. हम इस तरह कहें कि this case shall only be argued by Mr. Zubairi. Does it exclude other lawyers or not? It may include, but here is not. It's not the way. I say जो इस नची सर जरा सी एग्जांपल जरा इस पे नहीं लगती कोर्ट में, क्योंकि वहाँ बेंचेस की बात हो रही है. शायद नहीं, यकीन मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है. नहीं सर, आपकी अच्छी. मैं मान लेता हूँ. जी सर, मैं समझना चाहता हूँ कि इसके जरा मतलब बताएं ताकि हम उस आइन कानून के मुताबिक आगे इसको आप गलत फैसला with utmost respect सर, इसको आगे भी पढ़ेंगे आप इसको. And shall only be heard and decided benches constituted under rule for benches. बिल्कुल सही बात है. इसमें जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी वो सुनेगी, जो और कोई और रेगुलर बेंच नहीं सुन सकती. यही आपके फैसला है. नजर अब्बास में आपका नोट है उसके अंदर माय लॉर्ड का, जिसने 191A को सारा इंटरप्रेट किया है. Can you point out the provision where the commission is appointing members or nominating members to the constitutional bench? Which provision? 175A. पढ़ें please. Yes, my lord. Am I with Josh? Just read the relevant part. जी. वन में आता है. नहीं, 185 की बात. वो 191A1 है. पढ़ें ना जी please. Read the relevant जी. part. There shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. So this provision 191A, My lord. this is the power, the provision that gives power to the Judicial Commission. My lord. There is nothing else. नहीं, nothing So else. the power to nominate members who can form part of the constitutional bench. जी. There is no bar over here that says nobody can be nominated. This can only, it's a one-time thing. It basically says there is a judicial commission जी. and they will keep nominating बिल्कुल. members. जी. So when we read a bar and we constrain ourselves in the judicial order, we are saying that we read this as an absolute bar on our ability to pass a judicial order. So we don't have the ability to, if we go with the way, My the lord. understanding of 191A, although I say that we don't rely on this, but if we go with this, is there anything stopping this bench from directing the Judicial Commission from constituting a full court? The question being that the bar that is being read appears to be just an act of the Judicial Commission. It's not a bar under the law which says this cannot ever be done. This is a bar, this is simply saying there is a body that will nominate, so that body cannot be directed. Is that what the bar means? The only thing which my lord can direct that Judicial Commission is to appoint judges to the constitutional bench. Benches बनाना आपका काम है. जी. बार तो होता है ना कि एक चीज हो ही नहीं सकती. If you are reading 191A, it means the power lies with the Judicial Commission. बिल्कुल, यही मैं. It means that if we are going to rely on 191A, it means we will look at the Judicial Commission Yes. every time for nomination. So then the bar is what is constraining us from telling them that nominate everybody or nominate the pre-26th Amendment judges to sit on it. What is stopping a judicial order then? Because it is not an absolute bar. Yes. It is simply saying there is a nominating authority and they will do it. मैं तो कहता हूँ, मैंने यही पहले दिन यही कहा था कि my lords can always pass a judicial order directing them to nominate जजेस onto the, for example, अपील का जो प्रोविजन है, इस वक्त मैं अपील फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो आपने कह दिया ना. सवाल ये है कि बार है, बार नहीं है. There is no bar, क्योंकि जुडिशियल पावर इज इंटैक्ट. इस तरह आर्गुमेंट चेंज हो गए ना. आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुताबिक. एक पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए एक हाई कोर्ट जज का नाम आता है. जी सर. कमीशन में, जुडिशियल कमीशन में. जी. और वो थ्रू नहीं होता वहां से. जी सर. उसके बाद हम कहें कि द कमीशन हैज नो अथॉरिटी. सर. और उसको हम समझना शुरू करते हैं. वो एलिवेशन जज की अपॉइंटमेंट का अलग इशू है. यहाँ